the Chinese government is trying to increase the uh, indirect tax, and not only it is applying it on goods. Sorry, it's not only applying on goods; it's applying on services as well. क्यों? ताकि वो अपने कॉर्पोरेशंस के ऊपर से टैक्सेशन कम कर सके। जब वो कॉर्पोरेशन के ऊपर टैक्स कम करेगी, कौन सा टैक्स कम हो रहा है? डायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होगा। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगा रही है। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूजुअली रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है एज योर इनकम इंक्रीजेस यू आर पेइंग अ लोअर अमाउंट ऑफ टैक्स रेट। You're paying a lower amount of tax rate. The Chinese government wanted to raise living standards and hope that the cutting tax rate firms pay would attract multinational companies, MNCs to the country. State two reasons for levying taxes. Number one, levying का मतलब होता है applying. Levy का मतलब होता है जो चीज लागू होती है, लागू करना, किसी चीज पर कोई चीज अप्लाई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So the first part is state two reasons for applying taxes. मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करूंगा। It is to generate revenue for the government, to generate revenue for the government, and चूंकि यहाँ पे टैक्सेस लिखा हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कोई बात नहीं की हुई, हम कुछ भी लिख सकते हैं। टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट and to reduce the consumption of demerit goods. याद रखिएगा, demerit goods के ऊपर भी इसको लगा दिया जाता है। and to reduce the consumption of demerit goods. ये आपका आंसर हो गया। How cool. Demerit goods. For a 2-mark question, you just have to identify points. The examiner has given me mark here. To generate revenue for the government, this is the first mark, and the consumption of, and to reduce the consumption of demerit goods, this is the second mark. बस ये 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। Moving to point B, explain the difference between a progressive tax rate and a regressive tax rate. यहाँ पे सिर्फ define करने से आपको marks नहीं मिलेंगे। जो इसके अंदर critical चीज है वो you have to explain the difference between a progressive tax rate. So progressive tax rate increases as incomes increase. अब ये आइडेंटिफाई किया आपने, आपने ये क्या किया है? ये आपने आइडेंटिफाई किया, ये सिर्फ आईडी किया है आपने। 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, एक्सप्लेन नहीं किया। विच मीन्स, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। विच मीन्स एज इनकम्स increases, larger proportion of income is taxed. ये हो गई इसकी explanation. So progressive tax rate increases as income increase. What does it mean? Which means as income increases, a larger proportion of income is taxed. यानी कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती रहती है, आप अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा, हिस्सा हमेशा परसेंटेज में होता है। रिमेंबर, प्रोपोर्शन इज इन परसेंटेज। ज्यादा हिस्सा टैक्स देते हैं। नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड हियर, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, आई विल गेट 1 मार्क हियर। मुझे 2 मार्क मिल गए 4 में से। रिग्रेसिव टैक्स रेट decreases as incomes increase, which means a smaller, देखें मैंने डिफरेंशिएट कर दिया लार्जर और स्मॉलर, a smaller proportion of income is taxed
as incomes increase. जैसी हमारी इनकम बढ़ेगी हम टैक्स कम नहीं देंगे, टैक्स ज्यादा देंगे, लेकिन अब जो प्रोपोर्शन हम पे लग रहा है, जो हिस्सा हम अपनी इनकम का दे रहे हैं, वो कम हो जाएगा इन टैक्स. सो रेग्रेसिव टैक्स डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीज. ये एक हो गया. और फिर उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया. सो दिस गिव्स मी 4 marks. सी. For this question, I will not be writing complete sentences. I will just be writing statements and I'll draw links so that it becomes easy for you to understand, and I'll try to finish it very quickly. मुझे और भी करना है. Analyze how a cut in the rate of corporate taxation and income tax may influence the number of MNCs setting up in the country. Now understand, break this question into two. Analyze how a cut in the rates of corporation tax and income tax may influence the number of MNCs setting up in the country. Now this question has two parts. Analyze how a cut in the rate of corporation tax. इसकी बात अलग करनी है. This is the first part. This is part one. And income tax applied on people. इनकी बात करनी है. और इनसे लिंक क्या बनाना है कि दोनों के कम होने से नंबर ऑफ एमएनसी सेटिंग अप इन द कंट्री इंक्रीज कैसे होंगी या डिक्रीज. इन्फ्लुएंस आप करेंगे. तो हाउ एम आई गोइंग टू स्टार्ट. मुझे नॉलेज देनी है. सो इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स and corporate tax are example of direct tax, are example of clear. कोई परेशानी तो नहीं है. in as so अब आप क्या बताएंगे. now you're going to explain a reduction in income tax increases disposable income YD, disposable income of consumers. Purchasing powers increase. Demand for goods and services increase. When demand for goods and services increase, MNCs would be incentivized to invest more as market is increasing. As market is increasing. इससे इन्फ्लुएंस क्या होगा. मैंने लिंक किस चीज का निकालना है. What do I have to look at? Influence the number of MNCs. So what is going to happen to the number of MNCs? जब तक ये नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा. Number of MNCs will increase in the country will increase. ये हो गया पार्ट ए, यानी कि पार्ट वन हो गया इस क्वेश्चन का. पार्ट टू क्या है. अब आपने कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करनी है. A reduction in corporation tax as corporation tax reduces नेट प्रॉफिट. कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा. जब कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो क्या होगा. कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ जाएगी. कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी. ठीक है. और वो क्या कर सकते हैं. अच्छा, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे रुक जाऊंगा. मैं इसका एक और मोड ले रहा हूँ. एज कॉर्पोरेशन टैक्स डिक्रीजेस नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस, which means more money can be paid to shareholders as dividends if, अब शर्त क्या है. if MNC is a
PLC. It's a public limited company. So if a multinational company is a public limited company, now it can provide more dividends to its shareholders. इससे क्या हो गया? Value of the company, value of the business, of the shares, to get the dividend, the value of the shares would increase, and market capitalization, market capitalization is a way of measuring the business. Market capitalization of the firm increases. More MNCs will enter the market. Because if they know that यहाँ इस market में operate करने से उनकी value बढ़ती है, तो वो इस market में काम करेंगे, no? So I am pretty okay with my answer. मैंने ज़्यादा लंबा करके लिखा है, but I think this should suffice. Now, discuss whether or not people in a high income country always enjoy a high living standard than those in low income countries. So now you have to understand that the first thing जो आपको करनी है, करनी है, आपको समझना है high income country क्या होता है, right? High income country means an increase in GDP does not necessarily mean development is occurring. So high growth and high development are two different things. You have to understand that, right? So yes, high income countries mean क्या मतलब? Higher GDP per capita, which means that the income per person may be increasing. If this is the case, then HDI, Human Development Index, will also increase. Why? Because GDP per capita is part of HDI, is part of HDI, and HDI is used to measure living standards. So if HDI is used, Human Development Index is used to measure living standards, what does it mean? It means that as the country earns more income, उसके लोगों का living standard बढ़ेगा, right? ये हो गया पहला point. This should give me 2 marks, right? अब आपने yes कि in high income countries may have a higher living standard, इसी का दूसरा point आपने लिखना है. So living standard is also broadly defined as access to more goods and services. Living standard का मतलब क्या है? Access to more goods and services. So what does it mean? It means that as incomes increase, as GDP per capita increases, what will happen? What will happen as GDP per capita increases? As GDP per capita increases, the income of the people will increase. And when the incomes will increase, they will be able to afford more, they will be able to afford better quality education and healthcare, better quality education and healthcare. Living standards will increase, right? ये आपने बता दिया. But no, इसका दूसरा part क्या है? कि no, हर वक्त high income countries का नहीं बढ़ेगा. So no, high income countries may have lower living standards than low income countries
if their population is, if they are overpopulated. So if you are overpopulated, even if you're earning a higher level of income, what is going to happen is that the GDP per capita may be smaller, right? So what does it mean? More poverty levels than low income countries. This is the first point. And the second point, यहाँ पे I get 2 marks. Either I get 2 marks, so 6 marks मुझे अभी तक मिल चुके हैं. Then I will say no का ही मुझे दूसरा point देना है. कि no, if the gap between rich and poor is large between is large in the high income country, so what will happen? What will happen? If the gap between rich and poor is large in high income country, then and the poor are larger in number, living standard will only rise for a small segment of the population. I think this should be good enough. Please remember that I've just given points. I've not written my answer. So इतना छोटा 8 mark का आंसर नहीं हो सकता है. मैंने सिर्फ उसके points दिए हैं. And this is for your 8 mark. If I this